बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानित द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपु नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदिदैरुदिदै अगमन्निशा तदनु वन्दितुम् इन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरत पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसंकुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुधा निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुख भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवशिताखिलराजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणै प्रमदया मदयाञ्चकृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरञ्छणात् समधिरोप्य रतं त्वमपाहृता भुवि ततो विततो निनदो द्विषा क्वनु गदपशुपाल इति क्रुधा कृतरणा यदुभिश्च जिता नृप न तु भवान् उदचाल्य दतैरहो पिशुनकैशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणम् आगतम् आहवे वधमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणय कौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमय खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीम् विविधनर्मभिरेवम् अहर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमदे किल वक्त्रगिरा भवान् वरतनोत् अतनोत् अतिलोलतम् तदधिकै अथलालन कौशलै प्रणयिनीम् अधिगं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि न प्रगददां गदतान्तिमपाकुरु. श्री गुरुवायूरप्प शरणम्.